screen is visible to everyone. I just open here, that is a Microsoft window, that is a whiteboard Microsoft. So now, before I have to start one question, I'm just asking one question to one and all present in my class. So hope the screen is visible to everyone. Uh, Before I have to start, the first question is integral e raised to root x into dt is equal to. Now hope the screen is visible to everyone. Integral e raised to root x into dt is equal to. So if my question is just listen my question very properly, whether this function is integrable or not. This is my just a simple concept question. Whether this function is integrable or not, just comment in a chat box. No need to on your mic or something. Just comment on the chat box whether the function is integrable or not, or it may be integral with some substitution or something. Okay. So just waiting the responses coming from yes, 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 yes. Okay. Chain derivative. I'm asking about the Aditya Patel integration, not derivative. Definitely, derivative and integrations are sometimes we can say that is opposite to each things, or both are the different things, not like a similar things. So, okay, substitution. Let me tell you one funniest thing about mathematics, so that definitely you will like that thing. I'm just telling one story, or it can consider as a funniest thing. So one day, e raised to x and x square running down the street. Just listen carefully. One day, e raised to x and x square running down the street in the panic. What's wrong? E raised to x square asking to x square, और e raised to x ने पूछा x square से कि क्या wrong हो रहा है, और what's wrong. So that x square is uh, tell to e raised to x, that is there is a one differential operator. There is one differential operator in town. कि एक डिफरेंशियल ऑपरेटर आ चुका है टाउन में, तो एक्स स्क्वायर उससे बहुत डरा हुआ है. ये ऐसा उसने ई रेस टू एक्स से कहा. सो इफ आई रन into him too many times, I will disappear. So hope already you people clear a 12 science. That's why you enter in engineering. So that's why I'm asking this type of a question. So that x square clearly told, that is if I'm running towards him, I will disappear. Why disappear? Definitely if I will derivative x square 2 times or more than 1 times, then definitely it will disappear. So that e raised to x told, don't worry. He responded that e raised to x, I will go have a chat with that differential operator. He can't hurt me. Definitely he will not going to hurt, because e raised to x is a differentiable function several times. After all, I am e raised to x, or I am exponential function. So e raised to x walks down the street to the differential operator. My friend x squared tells me you are a differential operator. E raised to x told to that differential operator, well, I am e raised to x. So that differential operator is happy and told, pleased to meet you, e raised to x, says the differential operator. And that differential operator clearly told to e raised to x, I am d by dt. I am d by dt. And if I am going to differentiate d e raised to x by dt, then what will be my result?
Is it differentiable or I will get 0? Just comment in a chat box. I'm expecting the answer from your side. Just comment in a chat box. What you will get? You will get 0 if I'm not wrong. No, it is not 0. Yes, it is a 0, because whenever we have to differentiate or whenever we have to integrate the statement with respect to is important. So my first question answer is it is not integrable, because you can see this is e raised to x into dt. The only integrable term is इंटीग्रल इंटू डी टी. आप हमेशा क्वेश्चन अच्छी तरह से सुनने की आदत रखो. e raised to root x is not a differentiable function because here we have to integrate with respect to t. So only integrable function is dt. I know your answer is not wrong. You people told me that is yes, yes, yes. Obviously the whole integral in integrable. मैं आप लोग को wrong नहीं बोल रहा, but the thing is what, that function e raised to root x is treated here as a constant because यहाँ पे हम integration करेंगे with respect to t, with respect to t करने वाले हैं. Similarly, जो मैंने आपको एक स्टोरी बताया, एक funniest thing, कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है लेकिन अगर विथ रिस्पेक्ट टू हम चेंज कर दें तो डेफिनेटली इट विल बी 0. So that different, what I'm supposed to explain is that is a differential operator or differential operator or differentiation. डिफरेंशिएशन ये वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है. आप 11th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो, JEE बहुत सारी चीज़ें आप पढ़े पार हुए हो, JEE CET वगैरह में बहुत सारे जगह आपने ये चीज़ देखा है, सुना है, समझा है. सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा. राइट नाउ यू पीपल आर डूइंग इंजीनियरिंग and congratulations to everyone present in my class. That is, you are going to learn a 4-year engineering program, but I'm challenging you from each one of you, that is when you are going to pass BE, Comms, IT or Civil, whatever your respective branches, till the last day of your engineering, the mathematics is play a very important role from first semester to last semester. आपने अब तक 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, up to whatever the entrance exam you did in your past, in all the aspects, your focus was only you have to perform well and you have to get whatever good marks which are suitable for your respective branches or respective admissions or something, etc., etc. But here when you are in engineering, your aim must be, आपका ambition होना चाहिए, that is you are going to understand mathematics, why engineering is important with mathematics, why if we reduce mathematics from engineering, then engineering is not going to be engineering. So for that point of view, if I'm going to start your first chapter, that is known as a partial differentiation from my side, first chapter, not your syllabus point of view, it is a first chapter. As already I think Tina ma'am started, that is a complex number. So I thought I have to start module number 4, that is known as a partial differentiation. When I hear that is a partial differentiation, व्हाट इज अ पार्शियल? देखो पूरा साल ना सम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, स्टेटमेंट पे सॉल्यूशन लाना है, प्रूफ करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत सारी चीजें करना है. बट एक बार ना अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं कि आखिर पार्शियल डिफरेंशिएशन का जरूरत क्या है इंजीनियरिंग में, पार्शियल डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट क्या है,
मतलब क्यों आखिर पढ़ना है? मैं एज अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, या मैं डेटा साइंस बंद करना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, सिविल इंजीनियरिंग में हूँ, तो मैं आखिर उस चीज़ को पढ़ूँ क्यों? आखिर उसका रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ सम सॉल्व करने तक अगर उस सीमित है तो मुझे उसकी ज़रूरत क्या है? सो दिस आर द क्वेश्चंस डेफिनेटली कम आउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके हर एक चैप्टर से जनरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग है तो मैथ्स है, नहीं तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अदरवाइज आई टॉट अ स्टूडेंट फ्रॉम अ फार्मस 1 second, सी what happened, no, voice is dancing, okay, little bit internet issue or something, we can't help, but definitely I will repeat and all those things. So just a minute. Okay, now audible. Okay, moving ahead. So that's why when I taught a pharmacy students, there is also mathematics for a data concept, or for a kind of that is a sampling concept, and etc etc. So mathematics is always useful in all aspects. Definitely I will take one uh, conceptual lecture about how mathematics will help in engineering, as well as how mathematics is important for everyone's life or everyone's career or in day-to-day life. So here, if you aware about that is a part, when I say that is a differentiation or derivative, the word derivative differentiation. If you hear the term that is a Amazon, Amazon आपने सुना होगा अच्छी तरह से. If I say that is a what is a differentiation, so the best example of day-to-day's life or in our day-to-day's world, that is a derivative of Amazon is Amazon Prime. So that कैसा है कि हम डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से अगर अटैच रहते हैं तो डेफिनेटली कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, वो बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होता है. अगर इफ हम एग्जाम्पल सिर्फ मैथमेटिकली वे अगर देंगे तो डेफिनेटली आपको वही होगा कंसेप्ट के बस यही सम सॉल्व करना है, यही करना है एंड ऑल द थिंग्स. नो वे. So I'm just telling you that is a derivative of Amazon is Amazon Prime. So hope you will understand what is exactly derivative. I'm not going to explain the first principle or something etc etc. I will take the directly application. I will take an application of a derivative in partial differentiation. When I say that is a partial, so for that purpose, I just make a PPT. So I'm just going to start that PPT. Now hope that PPT is visible to everyone, partial derivative and its application. So always remember, whether you are going to learn complex number, matrices, partial derivative, successive derivative, or any kind of that is a algebraic equations or something. Mathematics is totally abstract. This is first thing you should understand. Maths is a total abstract subject. Maths, it's not like, or mathematics is not like any like a physics or chemistry. When you are going to understand about the chemistry, you have to perform a one chemical reactions, and you will see what is, you'll see that is this is exactly chemistry. And when you are saying that is a what is physics, you can see your fan or your any electrical things, and you can understand that this is actually physics. But when I say a mathematics, mathematics matlab kya? So the first thing, the first statement from my side is nature is written in mathematical language. This is my statement, or I can say that is this is my way of thinking. The nature is written in mathematical language. This is not a physical classroom. Otherwise मैं एक एक स्टूडेंट्स को पूछ इसके ऊपर आपको क्लेरिफाई करके बताता
why this statement is important. But just a second, someone want to join. Okay, so the nature is written in mathematical language. Why I'm telling this statement to everyone? Because from your morning, I can consider that is a routine from a morning. आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो, दैट टाइम माइट बी आप अलार्म रखते हो या आपके मॉम डैड आपको उठाते हैं, इट्स डिपेंड person to person, but maximum students are always taking the mobile alarm or hand watch alarm or etc etc. So from that beginning of the day to sleeping in the night or ending of the day till whole 24 hours, or you can utilize that is 18 hours, because 6 or 8 hours आप सो जाते हो तो उस वक्त आप मैथ्स यूज नहीं करते. बट फ्रॉम जब तक आप उठते हो, उठने के बाद से सोने तक आप always using a mathematics. I can just give one basic example of mathematics and statistics, because statistics is a son, or you can say the daughter, you can say that is a daughter of mathematics. अगर मैं son बोलूंगा तो girls को लगेगा that is why only son. So that's why I'm telling you that is a statistics is a son or a daughter of a mathematics. So from beginning of a day, when you are going to wake up in a morning, when alarm is ringing in your mobile phone, that time you realize whether I should wake up or not. It is the two things or two chances in your mind. The first chances is yes or no. So that time you decided. So from that point of view, you started a probability, or you started a thinking, and that is actually a statistic, or you can say it is a mathematics. So nowadays research from Times of India 2 or 3 weeks ago, it is clearly mentioned that there is a 2 generation gap of mathematics in United States of America. There is a 2 generation gap because why? वहाँ पे मैथमेटिक्स को ओमिट कर दिया गया था कुछ सिलेबस से, कुछ चीज जगहों से जो बेसिक स्कूल एजुकेशन होता है वहां से ओमिट कर दिया गया था. सो राइट नाउ देयर इज अ 2 generation gap of mathematics. So mathematics is a very important thing. So just given a very simple example from your beginning of a day. बाकी तो छोड़ो, बाकी when you are wake up ready, ड्रेस का मैचिंग करते हो, that is you are taking a permutation and combination applications from day to day life. बहुत सारी चीजें आप करते हो. आप अगर टी शर्ट जीन्स आप प्रॉपरली वेयर कर रहे हो, then you have to decide which shoes I have to wear, which kind of a belt I have to take. So there is etc etc, various things are available. Coloring matching, आप जीन्स है तो टी शर्ट्स पे कौन सा कलर मैच होगा, and all the things you have to decide, you have to check the probability, but you never realize you every student in my class, or every students, or every person in this universe is a good mathematician, but he or she never realize. So I'm just moving ahead with the partial derivative. My topic is a partial derivative, so I'm just going to explain. So partial derivative, as I mentioned, that is a clearly, that is what is a partial derivative. So I just given one example, that is a derivative of Amazon is Amazon Prime. This is the best example. So a partial derivative, when I say a partial, आप अगर घर पे हो, then you can see that is when we are going to buy, or when you hear that is a purchasing of a flat is based on square, 1 square, 2, मतलब एक square कितना है, एक 1 square feet is how much rate, or etc etc. So that time you understand what is a 1 square, or 1 square feet, or etc etc. Or when you are going to see the cylinder, or any examples, or if I say that is a civil engineering students, then civil engineering have to deal with the that infrastructures, or that construction things and all the things. When I say that is a computer science students,
तो आप देखोगे, आप स्टूडेंट्स हो, आप अभी 12th स्टैंडर्ड क्लियर किए हो, आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल रियलाइज व्हाट यू विल रियलाइज कि आप बहुत सारे गेम्स एंड ऑल आप खेलते थे, शायद गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, क्या कर दिया, इट डिपेंड, बट बहुत सारे गेम्स एंड ऑल आप खेलते थे, उसमें बहुत बार अपडेट आते रहते हैं, तो उसमें आप कभी देखोगे कि कोई चीज चेंज हो गई है, कोई चीज सेम रह गई है, कोई चीज केप्ट एज इट इज रखा गया है गेम में अपडेट में, और कोई चीज को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट में आप देखोगे तो जो पहले चेंज किया था उसको केप्ट एज इट इज कांस्टेंट रखा है, और दूसरी चीज को चेंज कर दिया गया। आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक एग्जांपल because I am not a computer engineer, or I'm not an information technology engineer or a civil engineer. I'm just a mathematician. So I can talk in terms of mathematics only. So sometimes you realize one thing is kept as a constant, other thing is changed. So that is actually they apply the partial derivative. They actually apply a partial derivative, and that is known as a partial derivative in your own language. आप अपने ओन लैंग्वेज में, अपने ओन कॉन्सेप्ट में समझ सकते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव किसको कहते हैं। ये तो मैथमेटिकल वे आपके सामने लिखा है, a function for a surface that depends on two variable x and y, दो वेरिएबल्स पे डिपेंड है। when we have to find the slope in the direction of x, अगर x के डायरेक्शन में आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे हो x डायरेक्शन में, then you have to keep y direction as a constant. Similarly, when you have to find the slope in the direction of y axis, whether it is upward or downward, you have to keep x axis as a constant. So that is actually partial things or partial वर्ड आपके लिए डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा कॉमन है। पार्शियली आपके दो फ्रेंड हो, तीन फ्रेंड हो, एक के साथ ज्यादा अच्छे से आप बिहेव करो, एक के साथ नहीं प्रॉपरली करो, समटाइम इट इज अ 2 वेरिएबल, समटाइम इट इज अ 3 वेरिएबल, समटाइम इट इज अ 5 वेरिएबल्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज, देखो आपके डैडी होंगे, आपके भाई होंगे, अगर आपके डैडी हैं और आप 3-4 भाई लोग हो, so your daddy you can consider as a function, and that function having a 3 or 4 variables. So that function when they have to do anything to their child, they will give a partial derivative rules. They will perform equally वहां पे परफॉर्म होगा। x के साथ भी वैसा ही डेरिवेटिव होगा, y के साथ भी वैसा ही डेरिवेटिव होगा, z के साथ भी वैसा ही डेरिवेटिव होगा। ऐसा नहीं है कि x के लिए हायर एजुकेशन रखें, y के लिए हायर एजुकेशन नहीं है, z के लिए हायर उससे कम एजुकेशन है। नो वे, ऑल विल गेट equal things. So that is again a best example of a day to day life of a partial derivative. सम सॉल्व करना, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, लाइफ टाइम आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग रखोगे, एंड यू विल गेट अ इंटरेस्ट अबाउट मैथमेटिक्स। अदरवाइज सिर्फ सम सॉल्व करना ना बहुत इजी है। आई कैन स्टार्ट बिकॉज आई हैव टू वर्क, दैट इज अ ग्राफिक टैबलेट, आई कैन स्टार्ट, बहुत अच्छा टाइम है अपने पास, यू विल लर्न एंड डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड नाउ। और वी कैन फाइंड द स्लोप इन द डायरेक्शन while keeping x as a fixed. One thing that is I'm telling you, if there is a lagging in a voice or in a screen, or sometime my internet will be down or etc, तो कोई एक अपना माइक ऑन करके बोल देना, बिकॉज जब मैं स्क्रीन शेयर किया हूं तो मुझे किसी का चैट या कोई चीज शो नहीं करता है। सो प्लीज बी क्लियर विद दिस। कोई भी एक स्टूडेंट्स इनिशिएटिव लेके माइक ऑन करके बोल देना कि सर वॉइस नहीं आ रहा है या फिर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है एंड ऑल द थिंग्स। अदरवाइज आप चैट लिखते रहोगे और मुझे नहीं समझेगा। Okay, sir. So this is my request to everyone. Yes? Okay, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So there is a function of a one variable f of x equal to x square. Here is a function of f of x equal to x square. Today I will explain only the concept. From tomorrow onwards we will start the problem solution and all the things. So here is a function of one variable f of x equal to x square, and its derivative, already you people aware about these things, that is a 2x. जो example मैंने अभी आपको दिखाया था कि x square को अगर एक बार डेरिवेटिव अगर 2x अगर बहुत ज्यादा डिफरेंशियल ऑपरेटर के पास जाएगा तो it will vanish.
finish. So similarly, but what about the function of two variables? As I mentioned clearly, that is your father is having a two child. आप हो, आपके sister हो, या आप हो, आपके एक और brother हैं. Two variables x and y. So that time what the function will be first differentiating with respect to x and then differentiating with respect to y. जब आप with respect to x करोगे तो y वेरिएबल को आप कांस्टेंट रखोगे. y वेरिएबल एक नंबर कंसीडर कर लो, और यू कैन कंसीडर एज अ y वेरिएबल एज अ कांस्टेंट पार्ट. सो दैट व्हेन हम डेरिवेटिव कभी भी कांस्टेंट टर्म का करते हैं तो हमको रिजल्ट पता है जीरो आता है. अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा. सो दैट टाइम f dash of x is equal to 2x. Similarly, when we have to differentiate with respect to y, then it will becomes 2y. तो आपको क्या मिलेगा? 2y मिलेगा, और उसमें x आपका 0 हो जाएगा. तो just make things clear and proper in your mind, that is what is exactly partial derivative, क्या हमको करना है इस प्रॉब्लम में, या क्या हमको करना है इस मॉड्यूल में, इस चैप्टर में. तो उस बेसिस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे. So that's why I just make a simple PPT for understanding of a partial derivative. Now moving ahead with, that is partial derivatives, more example, as I mentioned, that is a y. When x is constant, we have to find the derivative of y, or with respect to y. So now holding a variable as a constant, as all of you are aware about that, the volume of a cylinder is what? Pi r square h, where r is a radius, h is a height. You can see from the diagram. कभी कभार हम क्या करते हैं, ये जो रेडियस है, रेडियस हम फिक्स करते हैं और हाइट हम इंक्रीज कर देते हैं. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके आपको बताया था, या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड while doing RCC work for our own house or something. जब हमारा बजट ऐसा होता है कि वी हैव टू मेक दैट इज ओनली ग्राउंड फ्लोर, तो हम ग्राउंड फ्लोर बना देते हैं. थोड़ा बजट हमारा बढ़ जाता है, देन वी कैन मेक अ वन फर्स्ट फ्लोर, देन वी मेक अ सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. तो दैट टाइम द रेडियस इज केप्ट फिक्स्ड, बट द हाइट, एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको कि आपका जो नीचे का रेडियस है, या वी कैन से दैट इज हाइट इनटू ब्रेथ होता है, तो नीचे की जो चौड़ाई जिसको हम कहते हैं, दैट इज फिक्स्ड, बट द हाइट माइट बी इंक्रीजेस. बहुत बार ऐसा होता है in some structures or some things, not in a civil engineering, I'm telling you this, sometime in a any kind of a software upgradations or anything, the height must be fixed but the radius increases. Or what you can understand, that is you can see that is while playing PUBG or any kind of such a games, the game is must fixed but the radius increases. एरिया बढ़ जाता है कि कभी कोई एक कंट्री के बारे में था, कभी 2 कंट्री हो गया, 3 कंट्री के बारे में, मतलब उसके जो मैप्स हैं वो मैप्स ओपन होते चले गए आपके. सो दैट टाइम द रेडियस इज इंक्रीजेस. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज what is a partial derivative in our core branches, because IT, comms, etc., these are the similar kind of branches, artificial intelligence, data science. These are the specialization of their respective core branches. So the partial derivative or in cylinder v is equal to pi r square h. जब हम with respect to r डेरिवेटिव करेंगे तो हाइट को हम कांस्टेंट रखेंगे, हाइट को हम कुछ नहीं कर सकते हैं. दैट टाइम वी हैव टू ट्रीट हाइट एज इट इज. तो देखोगे आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है आपका, इसको हम जब विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पाई एंड एच ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. पाई और एच यहाँ पे आप देखोगे अच्छी तरह से, दैट इज पाई and h is treated as a constant, and derivative of r square with respect to r, you will get 2 pi r h. Similarly, अगर हम r
और r जो हमारा था रेडियस उसको हम कांस्टेंट कर रहे हैं और हाइट को हम अगर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, that time you can see that is pi r square treated as it is and derivative of h will becomes 1. So that time you will get pi r square. कब? जब with respect to h आपने derivative किया. So this is just an example of a partial derivative so that you will understand what exactly application of partial derivative. Now one more example. Let's see another example, that is surface area of a square prism. The surface area of a square prism. So you can just see the diagram, the top and bottom with areas of x square each and 4 sides of the area. So f of xy is 2x square plus 4xy. So when while applying f dash x, f dash y, जब f dash of x करेंगे तो सिर्फ with respect to x डेरिवेटिव आएगा तो 4x plus 4y. While applying the derivative of f of x comma y with respect to f of y, तो f dash of y आपको मिल गया है यहाँ पे f dash of y you will getting. So that time x is treated as a constant, so this part is 0 and you will getting 4x. Sir, do we have to write anything? What? No, nothing. No need to write these things. Only you have to just see the PPTs. Today I'm not going to solve any problems or anything. So just Okay. focus on PPT and just understand the concept of the partial derivative and what is exact application of your respective branch. Nothing more. Okay, sir. Now this is for 3 variables. As I mentioned earlier, sometime it is for 2 variables, sometime it is for 3 variables. ऐसा नहीं है कि ये 2 वेरिएबल तक ही सीमित है और 2 वेरिएबल पे ही रहेगा. So 3 more variables, 3 variables हैं, तो you can just see that is जब with respect to x आप डेरिवेटिव करोगे तो y और z आपके कांस्टेंट ट्रीट होंगे. जब with respect to y वेरिएबल डेरिवेटिव करोगे that time you have to kept x and z as a constant. जब with respect to z आप डिफरेंशिएट करोगे that time you have to treat x and y as a constant. Constant term के तरह से treat करोगे. This is a just example for 3 variables and you can see that is one example, f of x comma y. All recording you will see in your classroom as well as the link you can see. So examples of f of x comma y is equal to y cube sin x plus x square tan y. So example of x comma y is equal to y cube sin x plus x square tan y. यहाँ पे कोई वगैरह हमको नहीं सॉल्व करना है, खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है आपको. So it has x and y all over the place. So let us try the later change trick. With respect to x we can change y to k. So k cube क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ सकती है. y cube sin x plus x square tan y. So just we mention f of x y k cube sin a because this part is treated as a constant. So f dash of x will become k cube as it is and derivative of sin x is cos x. x square का डेरिवेटिव आपका 2x हो गया है and tan k kept as it is. But remember to turn it back again. तो ये चीजें आपको याद रखना है. So f dash of x you will get this result. Likewise with respect to y, जब with respect to y आपको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव आप करोगे तो फिर से वहां पे चेंजेस किया गया है x into k. तो x को आपने k कर दिया यहाँ पे. So that time you will get y cube sin k plus k square tan y. So that time f dash of y is equal to 3y square sin k plus k square sec square y. So f dash of y is equal to 3y square sin x plus x square sec square y. So this kind of problems we have to tackle in our syllabus. कि कभी सब्स्टिट्यूशन भी करना है, कभी डायरेक्ट भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है. Basically, what is a partial derivative? The partial derivative here we have to use f dash of x. मैंने अभी तक तो f dash of x से representation किया है, but sometime it is known as a dou f by dou x
or do. That symbol is known as a do, or sometime it is known as a daba. daba से भी यूज करते हैं इसको, बहुत सारे बुक में डाबा भी मिलेगा, बहुत सारे बुक में आपको ये भी मिलेगा, क्या नाम है, डो भी मिलेगा, तो इट डिपेंड. डाबा इज कॉल्ड डेल और डी और कर्ली डी. डेल से भी आप बोल सकते हो, डी से भी कर सकते हो, कर्ली डी से भी बोल सकते हो. एंड इन आवर लोकल बुक्स इट इज नोन एज अ डो. डो से भी उसको रिप्रेजेंटेशन है. सो डो एफ इज डेल एफ डेल एक्स. सो जिस तरह आपको याद रखना है उस तरह आप याद रख सकते हो. इट्स अप टू यू. फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स. एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व किया गया है, देखो. एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस 3 एक्स वाई जेड यूजिंग कर्ली डी नोटेशंस. तो उसी तरह से नोटेशन से फाइंड आउट किया गया है डो एफ बाई डो एक्स वाइल कैलकुलेटिंग. जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस फंक्शन का कैलकुलेट करना है तो y एंड z ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो वो केप्ट एज इट इज है, सिर्फ x वाले पार्ट का डेरिवेटिव हुआ है. जब विथ रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट किया गया है तो यू कैन सी दैट x एंड z आर ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. तो यहाँ पे देखोगे तो y है ही नहीं, तो ये पूरा 0 हो जाता है. सो माइनस 3xz. एंड while calculating dou f by dou z, dou f by dou z, you can see that it is minus 3xy. So you might prefer that notations. It certainly looks cool. Now this is just a calculus symbol. Calculus symbol things. Already you people are aware. You have to learn these things in your second semester. This is double integral, triple integral, closed integral, closed surface integral, closed volume integral. तो ये जो 1 2 3 4 सेकेंड थर्ड, ये मतलब डबल ट्रिपल क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रल. दिस पार्ट यू विल लर्न इन योर सेकेंड सेमेस्टर. ऑलरेडी इमेजिनरी यूनिट यू स्टार्टेड, अच्छी तरह से आपने स्टार्ट किया है. ये चीज़ पे मैं आपको स्टार्ट किया हूँ पढ़ाने के लिए. डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, ऑल थिंग्स आई विल कवर. आपको nth डेरिवेटिव तक आपको समझना है, जानना है. पार्शियल डेरिवेटिव हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड स्टार्ट स्टडिंग. नाउ आई एम कमिंग टू अ क्वेश्चन आंसर सेशन. If anyone having any doubts regarding partial derivative or whatever things I explained from a PPT, if you people are facing any kind of difficulties to understanding regarding partial derivative, today I never take, I'm not taking any single questions or numericals. Numericals and question session will start from tomorrow onwards or pura semester ही पढ़ना है. But for every chapters or every module, you should understand the applications. What are the application? What are the concept we have to utilize in your core subjects? So अभी क्वेश्चन अराइज होता होगा कि आखिर कोर सब्जेक्ट में तो सर ने बताया नहीं. सो कोर सब्जेक्ट तो अभी आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है ही नहीं. बट व्हेन यू विल एंटर इन योर सेकेंड ईयर सेम 3, you are a computer or IT engineer, computer or IT engineering students, then you will belongs to one subject, and that subject is known as a microprocessor and controller. Microprocessor and controller. In that subject you will learn operator, that is known as a operator, and that operator is basically partial things. उसमें जो rules apply करोगे आप, वो partial derivatives के rules apply करोगे, regulations apply करोगे. While you will enter in 7th semester as well as in 8th semester, there is one subject known as a image processing and video processing. Image processing and video processing. उसमें आप partial derivative के साथ साथ you have to utilize complex analysis, complex number. So that time you have to utilize both the things. Okay, so partial derivative, integral, double integral, triple integral, all the things you have to utilize in your respective subjects.
year by year or semester by semester. For a computer engineering students as well as a information technology engineer, you have to use, that is one more mathematics term known as a discrete mathematics. Similarly for artificial intelligence students as well as data science students. But if you are a civil engineer students, then you have to tackle मिनी मैथमेटिक्स, मतलब थोड़ा ज़्यादा मैथ्स रिलेटेड, बिकॉज आपका जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस. You will learn a many mathematical subjects kind like integral, double integral, triple integral, closed line integral. Okay. Sir, you are not audible. Yeah, I just off. Just hold on. Now audible? Yeah, sir. Okay, thank you. So this is actually we learn for today's things. I'm just going to don't think comment on the in a chat box, as I this lectures is going to record it, so please be aware these things, commenting anything. Okay, now I'm just going to take the attendance. Just wait. I just share one Google form. Just open it in a chat box I shared. Just open it and fill it for the attendance purpose. It's not open. Sir, it is not opening. What it shows? Sir, it is not Just opening. a minute. Now check. परमिशन मांग रहा है. Now check. Just wait. I'm sharing the next new link. Still not working. It's asking for a permission. If you are using a universal ID, then again. Now opening. It's open, sir. Okay. Yeah, sir, it's Yes, it is open. working. Yeah. Yes, sir, Move working. Okay. Move ahead. Just fill up. Fill it. Just taking the attendance. Done. Done, sir, done. Yeah, I can see that is no worry. No need to comment on that. Already I have this. You can see that is. How Still many not students- able to do it, sir. Can't help. You have to use universal email ID. Yes, sir, done. Okay, now any queries regarding partial derivative or anything? I can ask one by one. तो क्या है, मुझे भी नाम याद रह जाएगा आप लोग का. Just a minute. And don't left a lecture, because ये तो attendance मैंने लिया है. मैं एक attendance और लूंगा. That attendance is known as a meet attendance. कि लास्ट में आप कितने लोग प्रेजेंट हो उसमें, जस्ट लाइक मॉनिटरिंग होता है यहाँ पे लेक्चर्स का, मीट अटेंडेंस मॉनिटर होता है. तो आई कैन सी दिस पार्ट. आप अगर अच्छी तरह से देखोगे, मैं आपको शो कर दूं, नहीं तो आपको लगेगा सर सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं. देयर आर currently 82 members are there in our class. You can see that is at last I will see this Excel sheet.
see this, all the names must be in our database. So उसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा, तो लास्ट तक आपको रुकना है। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने वो भेज दिया तो आपको आगे नहीं करना है। नो वे, यू हैव टू गो अहेड विद द सिमिलर काइंड। जब तक मैं नहीं बोलता हूँ, यू आर नॉट सपोज टू लेफ्ट फ्रॉम दिस मीट, you should have to wait. And anyway, I'm going to take the name one by one. Bipin Yadav, any doubts regarding today's topic of partial differentiation? No, sir. Okay. Abhishek Kumar? No, sir. No doubt. Okay. Abhishek Tekalkar? Yes, sir. Okay. Tell me, what is your doubt? Abhishek Tekalkar, doubt क्या है? Yes, sir. Doubt. Sir, I need to watch this lecture again because voice is breaking between the lectures. Okay, fine. I will share the recording in our classroom. तो आप देख लेना after sir. 1 hour, or I will share. Might be before 5 o'clock. I will upload the lectures in our classroom, so that time you can see. Okay. Yes, sir. Just a wait. Aditi, any doubt? Aditya, any doubt? Aditya Patel, any doubt? Ali Akbar, any doubt? Yes, sir. No, The sir. same issue, sir. Network issue. I'm gonna watch this lecture again. Okay. Alia Saman, any doubt? Aman, No, any sir. doubt? Aniket, Animesh, No, sir. Ashish, Ashutosh Upadhyay, Atul Shukla, any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so there are 84 names. If anyone facing any doubts regarding this, you can just comment in a chat box. If the mic is not working or something, you can just tell me. Because see, if you are going to clear your doubts on respective day, then it will be very good from my side as well as for your side. Okay, fine. Thank you. And just moving ahead, as I have to tell you the few books names which you are going to use. Yes, daily basis where we have to make separate books. I'm just going to tell you in last 5 minutes. इसलिए मैं थोड़ा रखा हूँ. For mathematics, you should aware about that is already. I think Tina ma'am ने आपको explain किया होगा. There is a 80 marks in external examination, 20 marks for internal examinations. Kajal, today's lecture was only for, or today's lecture is only for understanding of the partial differentiation. Yes, from tomorrow onwards, we will start problems which are based on our syllabus. During that problem solving, definitely every day I will explain few more applications which are belongs to your respective core branch as well as your day-to-day life. We will teach mathematics of the other modules, because this part is basically belongs to calculus. I did my PhD in calculus, that is known as the spatial function basic mathematics. So that thing is basically we can say that is not 100% belongs to your core branches or something. It is like थोड़ा बहुत application use किया गया है or something. So but others जो हैं आपके like matrices or any
things like we can say that is this part in indeterminate forms or something. That parts are maximum based or maximum application based on your syllabus. So definitely I will give the example on life. Now see, you have to make a separate book for mathematics. Already I think टीना मैम ने शेयर किया होगा, तो आप उसी बेस पे चलो कि मैम ने बोला होगा सेपरेट बुक, तो वो बुक रखो, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज पार्शियल साथ में लिख सकते हो। अगर सेपरेट करना है 50-50% तो सेपरेट कर दो, बिकॉज 50% वो आपको टीच करने वाले हैं, 50% मैं आपको टीच करने वाला हूँ। तो आप 50% सेपरेट कर लो, no worries about this part. And there will be tutorial for 20 marks if it will be online. If it will be online, तो obviously online ही होगा, but from 15 Feb might be a 50% working will be started और college will be started. तो अगर college होगा तो college में भी उसी बेस्ड होगा। जैसे यहाँ पे आपको sums लिख के upload करना है and all the things, definitely we will guide, myself and man will definitely guide कि कैसे करना है, क्या करना है। If it based on MCQ concept, definitely will take MCQ conceptual based, तो उस बेसिस पे आपको 20 मार्क्स है। तो according to that basis you have to utilize your time. So 80 plus 20, it will be 125 marks for your term work, and that term work is based on tutorial. That term work is based on tutorial. So please be understand with these things. Tutorial आपको अच्छे से देना है, बहुत अच्छे से देना है। 5 marks is go for attendance, and rest 20 marks is based on your tutorial. तो जो भी आपके tutorials होंगे उनको separately आपको करना है। अगर ऑनलाइन हो तो आप लिख के अपलोड करोगे and all the things, ये चीज आपको कैरी करना है। कैलकुलेटर आप अपने साथ में रखो। ऑलरेडी शिवम सर ने एक्सप्लेन किया है कौन सा कैलसी यूज करना, बिकॉज इन मैथमेटिक्स और इन एनी सब्जेक्ट्स यू कैन यूज कैलसी। सो दैट कैलसी आपको आगे थोड़े स्टैटिस्टिकल चैप्टर्स हैं, तो उसमें स्टैटिस्टिकल में आपको प्रॉब्लम बेस्ड आएंगे उस तरह से, तो उसमें वैल्यूज रख के आप सिंप्लीफाई करोगे, बिकॉज वो वैल्यूज थोड़े डेसिमल कॉन्सेप्चुअल हैं। तो by your own it will be a difficult you people to solve and all the things. So definitely you how to use that, definitely I will guide, no worries, we will guide, हम लोग गाइड करेंगे। आप कैलसी लो, डेफिनेटली जब वो पार्ट आएगा तो हम लोग उसके लिए पहले एक लेक्चर रखेंगे, एंड दैट टाइम डेफिनेटली वी विल गाइड। तो उसके लिए ऐसा कोई भी आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इज फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग इज अ बेस। आप अगर फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर कर ले जाते हो, यू विल क्लियर 30 to 50% engineering, because from second year to final year the path is very easy. So follow your teachers, your guides very well, definitely you will get a more idea on tutorials. The tutorial will be based on your module wise. आपका मॉड्यूल जो है उसी के ऊपर, जैसे मैं पार्शियल पढ़ा रहा हूँ तो पार्शियल पे ट्यूटोरियल होगा आपका। हाँ, एंड द बुक्स यू हैव टू रिफर द फर्स्ट बुक, इफ आई एम गोइंग टू से, इज नॉट अ कुंभोजकर, it is not a Kumbhojkar. The first book you have to refer is a B.S. Garewal, which is available in our library, because Kumbhojkar is near about a textbook concept, but you are engineering student, you should learn at least once or twice a reference book, and that reference book is known as a B.S. Garewal Engineering Mathematics. So you should see that book which is present in our library, B.S. Garewal. You can see that is already, I can show you the Google if you want. Engineering Mathematics by B.S. Garewal. So no need to buy or anything. It is available at our library. You have to just visit, and you can take in your library card.
and according to library you will get. B.S. Dewal is a very famous author, engineering mathematics. So according to that concept, you have to from that concept which is present in your B.S. Garewal, you can utilize in your respective modules or etc. But for a Mumbai University pattern, you can refer that is Applied Mathematics 1 by G.V. Kumbhojkar or Engineering Mathematics 1 by G.V. Kumbhojkar. ये बुक ले लो, लेकिन BS गरेवाल लोगे तो उसमें आपको हर टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे. लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो कुंभोजकर का बुक है, G.V. कुंभोजकर, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये मतलब प्रॉब्लम्स वो मिलेंगे जो मुंबई यूनिवर्सिटी में होते हैं. बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल अटेम्प्ट करते हो, तो दैट एग्जामिनेशंस पर्पस यू शुड हैव टू यूज BS गरेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक. So this is our today's lectures. Just wait for 1 minute and then you can leave. I'm just stopping and just taking one more time attendance of a Google Meet, and then you can leave. Okay, thank you so much. Now you can leave. Have a nice day. See you tomorrow. Thank you.